So hello guys, how are you? Welcome to your YouTube channel. Let's learn. So guys, this video gonna be special for you because in this video we will be learning extra three functions which are used in a graphical programming. So these three functions equally important while developing a structure or architecture of any object. So let's see which are those three functions. So you can see on the screen three functions are given, that is circle function, ellipse function and arc function. These three functions mostly used by the engineer while developing and designing the structure of any object like building, car or something, any object. Okay, so as move on we can see the entire circle function and its information. So circle function draws the circle on the console. As you can see the syntax of the function, it takes two parameters, that is first is the position and next one is radius. Okay, it is a parameterized function which contains two parameters. So next one is nothing but the ellipse function. So as the name of the function ellipse, it's draw ellipse shape on the console. It is also a parameter function, so it takes 5 parameters. So first one is the starting point, starting angle, ending angle, x radius and y radius. So it's draw an ellipse on the console. As you can see the shape of ellipse. So next one is the arc function. It draws the arc like shape you can see on the screen on the console. It is also a parameterized function, so it takes 5 parameters, that is the x point, y point, starting angle, ending angle and radius. So without wasting a time, let's move towards the implementation. So we have to first create a new file. Okay, so maximize the screen. Okay, so in graphics program and in a C++ program we know the three header files which are required. So iostream, conio and most important graphics.h. So I'm starting here from main function. Okay, so I'm first declaring a two main function which are it should be include while writing the program, any program. So clear screen and getCS function. So अब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ gd detect gm and I and j. ओके, सो मेरे वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं. मैं initgraph फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूँगा और उसको पैरामीटर दूंगा. ओके, सो initgraph. So I'm loading here graphics driver and graphics mode, that is gm and gd, and I'm here giving a path c colon /tc /bgi. bgi ये फोल्डर होता है जिसमें सारे ग्राफिक्स के फाइल्स होते हैं. ओके, so I'm here simply calling the function of the circle. So as you can see the syntax, it takes the two parameters, that is first in one is a position and next one is a radius. अब मैं वो फंक्शन कॉल करता हूँ. अब आप देखिए कि कैसे कॉल किया जाता है और कैसे पैरामीटर पास किए जाते हैं. तो मैं पैरामीटर देता हूँ 200 220 एंड रेडियस में 50 की देता हूँ. ओके, सो नाउ लेट्स सी द आउटपुट. ओके, सो यू कैन सी द आउटपुट सिंपली. सर्कल के बाद हमने देखा था इलिप्स फंक्शन.
तो अब हम ये फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिखता हूँ इलिप्स फंक्शन का। ये 5 पैरामीटर कंटेन करता है। STPT मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और यहाँ पर स्टार्टिंग एंगल होगा और उसके बाद एंडिंग एंगल होगा। मैं यहाँ पर सिंपली एंड लिखता हूँ। ओके, सो देन एक्स रेडियस एंड वाई रेडियस। एंगल की स्पेलिंग गलत है, इट्स ओके। सो आई एम हियर कॉलिंग ellipse function, so double E you have to cancel that one. Okay, अब मैं पैरामीटर देता हूँ। ओके, सो देखो कैसे पैरामीटर दिए जाते हैं। तो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ 100 का। ओके, स्टार्टिंग एंगल 0 रखता हूँ और एंडिंग एंगल 360 डिग्री और रेडियस 50 और 25। अब मैं आउटपुट देखता हूँ। So yes, you can see the ellipse on the top. Okay, so ellipse के बाद हमने arc function देखा था। So arc function क्या करता है, एक सर्कल ही ड्रॉ करता है। arc function draw a circle actually, but having a specific starting angle and ending angle। मतलब इसमें starting angle और ending angle दिए जाते हैं और उसके हिसाब से ये जो arc function है वो ड्रॉ करता है शेप। सो मैं यहाँ पर पैरामीटर दे रहा हूँ int x, int y। ओके, स्टार्टिंग एंगल दैट इज st एंगल एंड एंड एंगल दैट इज एंडिंग एंगल। अब स्पेलिंग सही है। और so, उसके बाद रेडियस। अब मैं यहाँ पर एक्चुअल फंक्शन कॉल करता हूँ आर्क और मैं पैरामीटर देता हूँ एज x पॉइंट एज 250 एंड 300 और उसके बाद स्टार्टिंग एंगल 0 और एंडिंग एंगल 180 और रेडियस देता हूँ 60 की। ओके, सेमीकोलन। नाउ कंपाइल द कोड, नो एरर। सो लेट्स सी आउटपुट। यस, यू कैन सी द आउटपुट एट द बॉटम। मैं इस पोजीशन ज़रा ठीक करता हूँ। ओके, सो मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट 300 देता हूँ और ये भी 300 देता हूँ y का। ओके, सो लेट्स सी। यस, ओके, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली 180 के बदले 360 करूँगा और ये आर्क फंक्शन हमें सर्कल ड्रॉ करके देगा। सो लेट्स कंपाइल द कोड एंड लेट्स सी द आउटपुट। यस, यू कैन सी एट द बॉटम। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइड्स, कीप्स लर्निंग, कीप्स एक्सप्लोरिंग। वीडियो लोकर्स नेक्स्ट वीडियो में काळजी घ्या, टेक केयर।